जी अस्सलाम वालेकुम। Am I audible to everyone? हेलो। जी नमान, आप मुझे सुन सकते हैं नमान साहब? जी सर, बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी सर। चलें, बेहतरीन। So let's see that whenever Dr. Gondal साहब is with us, we can start right away. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोंदल साहब को चेक कीजिए जरा। चलिए फिर आपकी तरफ से ना इंटरनेट इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है बाकी तो जमा सर ये जो There is a problem with on Gondal साहब side, so just be with us for a couple of minutes. It's going to fix that. नहीं, मैंने ऑन किया। सर मेरे ख्याल में हमारे मल्टीपल लिंक्स जाते हैं पुरानी कुछ आई वाले कल वाले लिंक किसी भी टाइम पे आप तो मैंने इसको कहा है कभी ना जो आप मुझे फॉरवर्ड करते हैं मैं उनके। मैं वो ठीक है साहब ने सच्चाई को किया जो मान लीजिए आप मुझे सुन सकते हैं? आपको माइक में आ रही है आवाज? ये म्यूट तो नहीं है ना? Gondal Saab will be with us in a couple of minutes. We've shared a link with him again, so I think वो जो हमारा पुराना सबसे पहला लिंक था वो शेयर किया गया था, तो उस पे मौजूद। आप स्क्रीन उनकी शेयर कर रहे हैं?
हो गए? चलो ठीक है, हम अब प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं। आवाज बंद करो, प्रेजेंटेशन पे आओ। मैडम ये भेज दें सबको ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है जी मेरी? स्लाइड शेयर सुजात, वो छोटा लैपटॉप किधर चला गया? जी स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है जी? आवाज जा ही नहीं रही जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी? सर आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? स्क्रीन शेयर हो रही है जी, स्क्रीन भी शेयर है सर। तो अभी आप नमान बोल रहे हैं? नमान की आवाज? जी सर, मैं नुमान बोल रहा हूँ सर। यार तुम्हारी आवाज बड़ी नोर आवाज थी तो फौरन मैं समझ गया। अब मुझे आप बहुत गाइड शुक्रिया। दे देंगे। इस तरह मेरे पास हमारी डायरेक्टर क्यूईसी प्रोफेसर बिल्किस मौजूद हैं और डायरेक्टर औरिक डॉक्टर अजरा मौजूद हैं। यहाँ पे हम तीनों मौजूद हैं और जब आप गाइड देंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हबीब बोल रहा हूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपकी तस्वीर नहीं आ रही, सिर्फ स्लाइड जा रही है। मैं नहीं, मेरी तस्वीर अब आपको आ रही होगी सर, आप अभी देखें। नहीं आ रही। मैं बिल्कुल आपके साथ बैठा हूं, मैं आपको बड़े अच्छे से देख सकता हूं। तो मैं लेट मी स्टार्ट फॉर्मली दिस सेशन। डॉक्टर साहब मुझे आप इजाजत दीजिए। तो लेट मी स्टार्ट विद द सेकंड सेशन ऑन टेलीमेडिसिन, artificial intelligence and its use in basically primary healthcare. That's something which Professor Khalid Masood Gondal Sahab will be talking about. He's basically a former Vice Chancellor of King Edward University. Now is currently working as a Vice Chancellor of Fatma Jinnah Medical University. So, ladies and gentlemen, you are all aware of the fact that the healthy nation is the mantra of the development of the country, and obviously their role, the medical universities' role, the health sector is pivotal in that area. So it's not a goal, but it's a precondition for meeting the challenge of reducing the poverty, to be honest. So that is something which is we're going to talk about, and more importantly, how the general universities and the health universities and technology universities can work together in times of difficulties, in times of testing, and to solve the local challenges. That's something which we are also going to talk about during this webinar, as well as during the conference as well, to find the ways where we can basically pool our resources, the limited resources, to get the better outcome in research and development as well. So we will start with the introduction of Professor Khalid Gondal Sahab, and then stage will be handed over to Khalid Gondal Sahab for his talk as well. So there'll be a 40-minute talk, and then there will be an interactive Professor session. Dr. Khalid Muhammad Gondal. He is the Vice Chancellor of Fatma Jinnah Medical University since July 2022. He has also served as Vice Chancellor of King Edward Medical University, Lahore from June 2018 to June 2022. Dr. Khalid Masood Gondal graduated from King Edward Medical College, Lahore, Pakistan in 1986. Then he completed his fellowship in surgery in 1992. He was appointed as a professor in 2005 and later became chairman Department of Surgery at his alma mater King Edward Medical University, Lahore. He has published more than 100 research publications in national and international journals. His main interest is in the field of medical education in Pakistan. He served as first regular Vice Chancellor of Fatma Jinnah Medical University in Lahore. He has also served as the Vice President, College of Physicians and Surgeons, Pakistan in 2011 and Senior Vice President of CPSP from 2015 to 2016. He was part of the delegation that represented CPSP in many countries, including the United States, Canada, UK, Ireland, and Saudi Arabia. Over to you, sir. माइक म्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो अपना माइक सर अनम्यूट कर देंगे, सर का माइक अनम्यूट कर देंगे प्लीज, जो आईटी के बंदे हैं। जी अब आवाज आ रही है जी? जी सर, अब ऑडिबल है सर। स्क्रीन शेयरिंग है इस वक्त? स्क्रीन शेयरिंग है जी?
जी सर, स्क्रीन भी शेयर है, आपकी Yes, आवाज sir. भी आ रही है जी। स्टार्ट करें प्लीज सर। Should I go on? So I was just thanking Bukhari Saab for arranging these pre-conference workshop, and I think they are the topics, they are very important, and he has generated a great interest in the conference, which is going to be held at the end of this month. And I think I'm going to discuss in next 25 minutes about the artificial intelligence and our experience of telemedicine department and teleconsultation. And then we also established the electronic monitoring system to address the issue of variation of the training and something about the role in competency-based medical education. Now, coming back to the artificial intelligence, we all know that is basically the machine intelligence in contrast to the natural intelligence which is displayed by the humans and the animals. And I will discuss the role of artificial intelligence in healthcare system. Artificial intelligence got a definitive role in the training, in research, in life care, in the treatment, in decision making, in the diagnosis of various disease. There are so many equipment they are available. Say if you name the radiology, start from the ultrasound, the CT scan, the PET scan, the MRI, these all are related to the artificial intelligence. Similarly, the early detection of the disease, and finally the keeping well the ailing humanity, there is a definitive role of artificial intelligence. This is something about the pictorial presentation of artificial intelligence role in the healthcare, its role in the like the personalized genetics, the mental health, the drug discovery, information and clinical trial, genetic research, role in the hospital, medical imaging, data analysis and the research. All these I think the department, they have got the definitive role of artificial intelligence. And now the final stage of artificial intelligence is, beside the use of these machines, is the role of robotics, especially in the department of the surgery. This is how the robotic use is going on, and this is one form of the artificial intelligence. Now, one important thing is the acceptance and scope of artificial intelligence in the world. I just wanted to quote one of the seminar where I represented Pakistan in Canada on the International Medical Educator Leadership Forum, where the discussion was going on whether the artificial intelligence is going to replace the clinician's future. They said, you just write down the symptoms, the signs, and then the investigation, the treatment slip will come out. You go to the pharmacy and get those medicine. So there's no need of the clinician. But in the end, the discussion going on in the two groups, and finally, the group which I was leading, the clinician, that proved its argument, and then they said the artificial intelligence is not going to replace the doctors, the clinician of future. Artificial intelligence and all these things, they are going to support the clinician in the diagnosis, in the management, but they cannot replace the clinician of the future. Now, this was something about the artificial intelligence. Now, our experience of the artificial intelligence in establishment of the Department of Telemedicine, especially during COVID pandemic, teleconsultation, its role in the training, monitoring, evaluation, and the role in the research. Now, we established the Department of Telemedicine at King Edward Medical University when the Chancellor Chaudhry Mohammad Sarwar gave the instruction to all the university to establish that department as the outdoor of your hospital and other hospitals that were closed. So this department was established on 18th March 2020 in King Edward Medical University. We started with the tele-corona, but later on we said, as the outdoor is closed, the patient, they cannot approach the doctor. So we extended this department to the telemedicine, telesurgery, telepsychiatry, telepediatrics, telegynae, telepulmonology, orthopedic, cardiology, dermatology, ENT, obesity, ophthalmology, vaccination, telenutrition, and now we have added the tele-dengue and tele-HIV. The in charge of this department, Professor Bilkis Shabir, is with me. I think she will be participating during the question answer session. This is the department, how that is working.
and the mode of communication we used, initially the mobile, WhatsApp, Skype. Then we thought there are some areas where there is no internet facility, so the landline facility that was also adopted, and that was also given. These are the number which we displayed on our website on various medias, the mobile number, land number, and Skype number, and people, they used to contact us using these different channels. This is, I think, the link of the different portal of this telemedicine department, admin portal for appointment. I don't want to go into the details, but just for the audience, there is a telemedicine app. If you go to the Google app, you can download that app, and then you can approach more than 12 specialists of various diseases, and this consultation is free of cost. I think there is nowhere in the world the teleconsultation being given in the free of cost. This is the example how the patient record is being recorded by the doctors, and then how the doctor is going to advise, like he notes the symptom and then the medication and the instruction, they are there. You can avail this facility while approaching through this telemedicine app. This is something about the statistic which we had the experience during COVID pandemic. Initial 1 year, the maximum number of the calls they were received by the Department of Medicine, and these were, I think, 7,218. But almost every specialty dealt a various type of patient through this teleconsultation. Similarly, you will be very interesting to see. We received the call from south to north, from all the provinces. Obviously, we were based in the Lahore, King Edward Medical University, Fatima Jinnah Medical University. So 9,652 calls, they were from Lahore. Then you name the Multan, Karachi, Ladkhana, from everywhere we were receiving the call. And beside these calls from the cities from Pakistan, the district of Pakistan, we also received the international call. And at that time, I think the doctors at their own places in the Middle East, even in the Western world, they were difficult to approach. So they availed the facility of teleconsultation of Pakistan, of our department. We received maximum number of calls initially from Saudi Arabia. But when I presented that project in the Dubai Expo, then we started receiving the call from our expatriate in UAE. But we received the call from Middle East and even the developed world. This is how the teleconsultation was working. The doctors sitting at the periphery or the patient were sharing their investigation, and our specialist doctor to the level of the senior registrar, they were available. Even the professor, like Professor Bilkis Shabir and Saqib Saeed and all these professors, they were on the backup and they were available 24/7 for the consultation. This is how in the COVID, the patient used to show us the oxygen saturation, and our doctor through teleconsultation used to advise that yes, you can start now the steroid, you have to monitor the oxygen, you can start oxygen with 2 liters, and if the saturation was dropping down, then the telemedicine desk doctor, they were in contact with the doctor in the ICU and HDU, and then they managed their admission in the Mayo Hospital ICU and high dependency unit. The teledermatology, I think that played a very pivotal role. They just showed the picture and they got the full-fledged consultation and the prescription. Similarly, we had the linkage with the high dependency unit and ICU, and our alumni working in the US and UK, they were also linked, and the patient who were admitted in the ICU of COVID, they were managed through this group teleconsultation. This is how our doctors, while sitting in the ICU, they were consulting their professor. This is the East Medical Ward, and Professor Bilkis is being consulted through this telemedicine facility. These are the, I think, the follow of the patient on the dermatology side, and this is how the emergency patient, they were dealt by the teleconsultation. You can see the blood in the one of the bag, and this was shown to the consultant, and the consultant advised what you are going to do. This is the, I think, again, the telemedicine department consultation by the people outside the country. You can see on the right side, a person from China, he uploaded his ultrasound report, and this was translated by our doctor.
and consultation was given while this person sitting in the China. This is again the awareness, the preventive measures. They were also uploaded by our desk of the telemedicine. किस वक्त है lecture? Dr. Gondal Sahab? जी sir. I think it is going on. It's continued, sir. अपना mic जरा कीजिए switch. ये चल रहा है. जी जी. Okay. अभी on है. So in continued with that. मेरे ख्याल अगर तमाम पार्टिसिपेंट अपने माइक म्यूट कर लें तो शायद मैं आई एम इन द हाफ वे ऑफ दैट लेक्चर और क्वेश्चन आंसर में वी कैन डिस्कस like everybody is muted because I see in the that the lectures will start at 1 p.m. but now it's almost 1:25. सर लेक्चर इज गोइंग ऑन 15 सर मिनट हो डॉक्टर गए साहब लेक्चर चल रहा है. हाँ हम आपको सेशन में लेते हैं अब इंटरेक्टिव सेशन में प्लीज जी कंटिन्यू करें सर. आगे मैं आ रहा हूँ टेली न्यूट्रिशनल डेस्क जिसमें डायबिटिक पेशेंट को और तमाम पेशेंट को ओबीज पेशेंट को एडवाइस किया गया और इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्टीरॉइड लेने के बाद शुगर लेवल रिलेटिवली हाई हो गया. सो टेली न्यूट्रिशनल डेस्क उन्होंने एडवाइस किया. दिस वाज अ दुबई एक्सपो and I have the honor to present this project in the Dubai Expo and this was declared as one of the best world project. तो जब वो डेवलप वर्ल्ड के लोग वहां बैठे थे, I just asked them कि आपकी तो टेलीमेडिसिन पिछले 10 साल से है, हाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी प्रेस्क्रिप्शन में हम देख रहे हैं कि दिस टेली कंसल्टेशन इज फ्री ऑफ कास्ट, PKR 0 है. नोवेयर इन द वर्ल्ड इज द फ्री ऑफ कास्ट टेली कंसल्टेशन, either it is insurance covered or covered by some of the company. And then the various institutions like AKU, they invited me and I presented that project in various institutions. And the telemedicine department at Fatma Jara Medical University, we also established, and that is going on. And another important thing is, now there's an emergency of flood affected area. Our 3 teams, they have gone to the South Punjab, Evan Sharif, the Ladkana, and we have established now the telemedicine desk for flood affected area. इसमें आई थिंक हमारी पहली टीम जो साउथ पंजाब और लाड़काना और सिंध में गई, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको रवाना किया और ये उनकी डिटेल्स है. ये खूबसूरत पिक्चर है कि किस अंदाज में लोग रिस्पेक्ट करते हैं फ्लड इफेक्टेड एरिया में जब लोग उनको काउंसल करने के लिए जाते हैं. और फ्यूचर विजन में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑन परमानेंट बेसिस और ये हम तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक करेंगे ताकि वहां के डॉक्टर्स की हेल्प कर सकें. अब फर्स्ट हाफ ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज ओवर और अब मैं सेकंड हाफ ऑफ माय प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूं. टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन के बाद सेकंड इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन. स्पेशली हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, देयर इज वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग, हाउ वी आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ दीज ट्रेनी टू एड्रेस द वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग. कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के जो ट्रेनी 30,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा इनके सुपरवाइजर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं और हम टेली मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आईटी को किस अंदाज में यूज कर रहे हैं. दिस इज वन एग्जांपल कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ CPSP इज गोइंग ऑन 14 सेंटर. ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन की एक खूबसूरत मिसाल है एंड देयर इज अ सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ दैट ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये भी रोल है कि जो आज हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूं, आप मरी में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह से लोग मेरी बात सुन रहे हैं. इसी तरीके से हमारे तमाम सेंटर दे आर कनेक्टेड विद द वीडियो कनेक्टिविटी एंड वी आर यूजिंग दिस फैसिलिटी. और अब आते हैं पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर. कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ने अपने सेंटर एस्टेब्लिश किए काठमांडू, रियाज और रिसेंटली बर्मिंघम और डबलिन, एंड वी आर यूजिंग these IT facility to monitor these students who are working in Birmingham and Dublin. And you will be glad to know कि पाकिस्तान ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ने रिसेंटली अपना सेंटर बर्मिंघम में इनॉग्रेट किया. ये 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा वहां लहराया गया एंड दैट सेंटर इज नाउ कनेक्टेड विद आवर लाहौर एंड कराची सेंटर. इस वक्त 510 ट्रेनी जो आयरलैंड में काम कर रहे हैं उनको भी थ्रू IT सिस्टम मॉनिटर किया जा रहा है. That is the detail of that training. और ये एक छोटी सी एग्जांपल है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये आयरलैंड और UK में बच्चे जो जा रहे हैं उनको किस अंदाज में मॉनिटर किया जा रहा है. ये रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं. मैंने इंटरव्यू के बाद पूछा कि ये डॉक्टर्स हमारे जो इस वक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन से गुजर रहे हैं,
इनकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है। वी हैव प्रेजेंटेड दिस डॉक्टर टू यू पीपल, आपके पास काम कर रहे हैं। व्हाट इज योर इंप्रेशन अबाउट द ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान? तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है? इट इज जस्ट अ 1 minute clip. Good afternoon. My name is Michael Early. I'm the chairman of the Basic Surgical Training Committee here in the College of Surgeons in Ireland. A great honour to be doing this afternoon. Professor Trainer will be interviewing with. Professor Gondal here again. The last candidate is over, and probably we are going to complete the process now. What I would like to say is that we were extraordinarily impressed, number one, at the standard of all of the candidates. They are really a credit to your training schemes, and they were all absolutely excellent. I mean, it is really difficult to pick out the very best when you have so many good candidates. It's also a great compliment to you that the whole system worked extremely well, that we have gone through 5 different centres so far away, and we have had a very smooth transition with each of them. Absolutely. I think it has been a very, very positive experience for us this afternoon. The standard of all of the candidates has been really, really high, and we've been very impressed with the candidates and very impressed with the level of training that they have received in Pakistan. And I would echo what Professor Early says about the organization of the interviews this afternoon. It was absolutely without fault. It was fantastic. ये बुखारी साहब, मैंने सिर्फ ये स्लाइड इसलिए दिखाई है, कहते हैं जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये लोग आपके सिस्टम के बारे में कह रहे हैं, फैंटास्टिक सिस्टम। जिस दिन इंटरव्यू हमने कराए 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, उस दिन लाहौर में 5 सेंटर कनेक्टेड थे और 5 घंटे के इंटरव्यू में 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्टिविटी नहीं हुई। दिस इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी बाय अस। और इसके बाद ये यूके में हमारे ये डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, इनको भी इसी तरीके से बर्मिंघम हॉस्पिटल में, वॉल्सर, लीड्स हेल्थ, योर्कशायर में हम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग की जो वेरिएशन है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और उस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में अगले 5 मिनट में मैं बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो शुरू में था वो कन्वेंशनल लॉग बुक था, और कन्वेंशनल लॉग बुक में प्रॉब्लम्स थे, प्रोस्पेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं थी। ये वो कन्वेंशनल लॉग बुक जो आज से 15 साल पहले हमने ई लॉग पे शिफ्ट की, इनका प्रॉब्लम ये था रेगुलर पीरियोडिक मॉनिटरिंग नहीं थी और ट्रेनिंग के एंड पे प्रेजेंट की जाती थी, इसमें टाइम और डेट लिखी नहीं होती थी। सो वी स्टार्टेड दिस इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी in a way where there was a timely and systematic provision of information, prospective and regular monitoring of training with 360-degree feedback. और याद रखिएगा, जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट करते हैं, पहले सेंसिटाइजेशन, प्लानिंग, फिर पायलट प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंटेशन। 2008 में हमने तमाम ट्रेनर को सेंसिटाइज किया, प्लान किया 10 में, 11 में इसको हमने इंप्लीमेंट किया, फिर दुनिया में प्रेजेंट किया। फर्स्ट मेडिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया में, वी वर द चीफ गेस्ट ओवर देयर। कनाडा में मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको प्रेजेंट किया 2011 में, एंड इट वाज थ्रू। इसी तरीके से कनाडा में सेकंड टाइम मैंने एक स्टडी प्रेजेंट की, और ये उसका लिंक है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, फिर टाइम कंज्यूमिंग इसका है। ऑल दीज थिंग्स दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। और इसमें यह कि जो ट्रेनी 30,000 है, इनके पास आईडी पासवर्ड है, सुपरवाइजर के पास आईडी पासवर्ड है। जो ही वो ट्रेनी रजिस्टर्ड होता है, उनका पर्सनल प्रोफाइल और उनकी तमाम डिटेल्स प्रोग्राम की ई लॉग पे उनके पास आ जाती हैं। अब ट्रेनी वो अपने सुपरवाइजर को वीकली रिपोर्ट करता है कि मैंने ये कॉम्पिटेंसी अचीव कर ली है। सुपरवाइजर मंथली रिपोर्ट करेगा हमारे डायरेक्टरेट को कि ये कॉम्पिटेंसी इन्होंने अचीव की या नहीं की, अप्रूव, डिसअप्रूव, डिस्कस विद द एडिट। और जब ये रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, देन इट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलेज। और ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है जो मैं दिखाना चाह रहा था कि मैनुअल लॉग बुक तो 4 साल के आखिर में प्रेजेंट हो रही है। यहाँ जब कॉम्पिटेंसी बच्चा एंटर करता है, डेट और टाइम लिखा होता है। सो इन दिस वे
through this electronic logbook, you are doing the regular prospective monitoring, regular feedback दे रहे हैं, आप stop भी कर रहे हैं एक stage पे कि नहीं, you have to improve yourself. ये वो तमाम e-portals की detail है, supervisor, trainee and fellows. This is the dashboard. इसको मैं live demonstrate करना चाह रहा था, लेकिन बुखारी साहब किसी और कॉन्फ्रेंस में मुझे मौका मिला. I would like to demonstrate this live कि कैसे रजिस्ट्रेशन इसकी होती है, किस अंदाज में ईलॉग को मॉनिटर किया जाता है, फीडबैक किस अंदाज में है और इन आइकॉन्स की डिटेल्स क्या है. ये एक टेम्पलेट है कि ईलॉग में आपके क्रेडिटर्स लिखे हैं, फीडबैक लिखा हुआ है, आपके ट्रेनी की डिटेल्स है और ट्रेनी की क्या कॉम्पिटेंसी वो अचीव कर रहे हैं. अगर उसकी कॉम्पिटेंसी वेटिंग में है तो ब्लू अपीयर हो रही है, अप्रूव हो चुकी है तो ग्रीन है, और जो अप्रूव नहीं की रेड है. तो इम्तिहान में अपीयर होने से पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 80% ऑफ द कॉम्पिटेंसीज दे विल बी इन द ग्रीन कलर. अगर नहीं होंगी तो इम्तिहान में बैठ नहीं सकेगा. सो दिस इज अ वे इन विच वी आर यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि प्रोफेशनलिज्म, एथिकल प्रैक्टिसेस उस अंदाज में नहीं है. सो इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक के जरिए हम उनको ये भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलर कितना, पंक्चुअलिटी कितनी, किस अंदाज में टेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं, बिहेवियर पब्लिक के साथ, पेशेंट के साथ, अटेंडेंस के साथ कैसा. और ये ट्रेनी की लॉग बुक में भी ये तमाम चीजें हैं. ऑल दीज मटेरियल दे हैव बीन अपलोडेड इन द ट्रेनी. जिस कोर्स में दैट हैज बीन अपलोडेड. ये एक हमारा लिंक है, इसका जो ई लॉग का लिंक है, और इसमें अगर 1 मिनट की ये लाइव में डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे सकूं. आई एम सुपरवाइजर, आईडी पासवर्ड है. इसको जब लॉग इन करूंगा तो इस लॉग इन में ये तमाम चीजें, ये क्या चीज आ गई, अब इसमें ये तमाम चीजें लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं. दिस इज माई ई लॉग. अब ई लॉग को आप खोलेंगे तो इसमें ये सारा फीडबैक, क्रेडिटर, तमाम डिटेल्स, मेरे ट्रेनी उनकी तमाम, मेरे जो डॉक्टर जिनको मैंने ट्रेन किया उनकी तमाम डिटेल्स दे आर देयर, और डॉक्टर्स ने परफॉर्मा किस अंदाज में फिल किया, ये तमाम डिटेल्स हैं. और आप किसी एक को क्लिक करके देखते हैं कि ये बच्ची ने ये क्या क्या ऑपरेशन सीखे, क्या क्या ट्रेनिंग की, वो ब्लू में सामने आ रही है. किसी की डिटेल में जाना चाहें तो ये डिटेल में आपके सामने होगी. एंड पे अगर आप देखेंगे कि इन्होंने वाकई ये ट्रेनिंग अचीव की है, आप इसको अप्रूव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो दैट ब्लू जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये इसी को आप ई लॉग को रिसर्च के लिए भी यूज कर रहे हैं. आपके 30,000 ट्रेनी को आप एक क्वेश्चन भेजें, उनका रिस्पॉन्ड आता है. ये एक मैंने क्वेश्चन भेजा कि ये ई लॉग को कैसा फील कर रहे हैं, तो 7,450 ट्रेनी ने ये रिस्पॉन्ड किया. इसमें 80% का रिस्पॉन्स पॉजिटिव था. सो वी आर यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस बुक, ई लॉग बुक, फॉर द रिसर्च पर्पज टू. और अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, किसी और मौके पे इंशाल्लाह इसकी डिटेल में जाऊंगा. और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हुए जो है ये आपको जान के खुशी होगी कि आयरलैंड और यूके को हम ऐसे ही मॉनिटर कर रहे हैं जैसे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को करते हैं. ये आयरलैंड में मीटिंग है, उनके रॉयल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं. एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि मैं इंशाल्लाह जहां भी गया हूं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, पाकिस्तानी ड्रेस में गया हूं, एचकन शलवार कमीज के साथ. ई लॉग की प्रेजेंटेशन के बाद ये ईमेल पढ़ने वाली है. हेल्थ सर्विसेज चीफ लिख रही है ई लॉग की प्रेजेंटेशन के बाद, आयरलैंड की, रॉयल कॉलेज ऑफ आयरलैंड की ये प्रेसिडेंट भी रही है, एलिस बेगॉर्मन कहती है, प्रोफेसर गोंदल, आई विश टू लेट यू नो about your response of demonstration of e-log system. My colleague here in NDTP, along with our training body colleague, they were hugely impressed. They all are saying we should introduce something similar. So by the grace of Allah Almighty, Pakistan के educational system में, medical education में कुछ ऐसी चीजें हैं कि दुनिया उनको मान रही है और कहते हैं कि at present all the training body use a different system so they cannot talk to one another. So जो हमने issue of variation of training को address किया थ्रू ई लॉग के जरिए, उस पे दुनिया ने माना. और ये लास्ट हाफ मिनट का जो क्लिप मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, ये जो इंटरनेशनल स्कीम्स हमारी आयरलैंड और यूके के साथ है, इसको पिक किया इंटरनेशनल मीडिया ने, और उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट कोलैबोरेटिव स्कीम, कि बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, गुड टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, और हमारा फायदा क्या है कि दे लर्न द प्रोफेशनलिज्म एंड एथिकल प्रैक्टिसेस. ये बच्चे का फीडबैक सुने कि इस एक्सपोजर का और इस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का इन बच्चों को क्या फायदा हो रहा है, who are working in Ireland and UK. Dr. Mohammed Al-Wais is working at the Coombe Women and Infants Hospital in Dublin, Ireland.
He's come from Pakistan as part of an innovative scheme to give foreign doctors specialist training. When his 2-year stint here is over, he will return to Pakistan. And try to implement good things, positive attitudes over there. So ये पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये कि हम इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते रहे कोविड के दौरान ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। जब हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि ड्यूरिंग कोविड आप टेक्निक चेंज कर सकते हैं, तो उसमें हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग यूनिवर्सिटी में भी है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर इन किंग एडवर्ड एंड फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे कंडक्ट किया। ये हमारे 3 कैंडिडेट स्टक ऑफ हो गए थे लंदन में, अफगानिस्तान में और दुबई में। सो इनकी ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट की विद 360 डिग्री मॉनिटरिंग जो हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें अलाउ किया था। तो आई थिंक हाफ एन आवर इस वक्त हो चुका है मेरी इस प्रेजेंटेशन को। आई हैव डिस्कस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एंड मेडिकल एजुकेशन, खास तौर पे टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन। हम 20,000 के करीब पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो हमने इंप्लीमेंट की, हाउ इट हैज एड्रेस्ड द वेरिएशन इन द ट्रेनिंग, और इंटरनेशनली खास तौर पे यूके और आयरलैंड में इसकी किस अंदाज में एप्रिसिएशन हुई। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इन इनोवेशंस को शेयर करने का। एंड आई थिंक प्रोफेसर बिल्कीस इज देयर विद मी, डॉक्टर अजरा इज देयर विद मी, द डायरेक्टर QEC and director Arik, and we are there to respond to the questions. Thank you very much, sir. It was very informative and knowledgeable talk, and I'm sure during the testing times of a COVID, your telemedicine service has been benefited by most of the people, and the way you have basically outreach to the patient population all over the country. We know that the COVID was basically affecting millions of people across the country as well, and apart from that, many other diseases were neglected, and your telemedicine program certainly helped in basically addressing those issues as well. And apart from that, the e-log has been basically, is a commendable effort and acknowledged at the World Forum as well, and much appreciated for your this initiative. 2008, you said we started this sensitizing. In 2011, you implemented already that. So that's a message and a learning curve for all the universities, and I'm sure we'll try to implement your model in our universities and learn from you as well. So I'll give the house to the audience to ask any question and interact with Professor Khalid Gondal Sahab and his team. So please go ahead and ask question, and I'll ask my question towards the end. Anyone? Dr. Waqas would ask the first question to the computer-sized guy, and we have seen the beautiful Jamal combination of artificial intelligence and the sciences together in serving the community. Assalamu alaikum, sir. जी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है अब आपको? जी अब आ रही है जी। अच्छा सर, एक तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी सर, स्पेशली आपका जो LMS हो गया, पोर्टल हो गया, वो सारे माशाल्लाह जिसको पूरी दुनिया ने उसको आपको एप्रिसिएशन भी दी, तो बहुत अच्छा है सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारा इम्पैक्ट ऑफ टेलीमेडिसिन के लिहाज से कि फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कि आपके पास घर बैठे हुए पेशेंट्स के साथ हमने डॉक्टर्स ने इंटरेक्ट करना है, तो आप क्या कहते हैं फ्यूचर्स के लिहाज से हम विद इन द पाकिस्तान या हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं कि टेलीमेडिसिन के लिहाज से? और उसकी एक सेकेंडरी क्वेश्चन भी साथ में पुट कर देता हूँ। एक पेपर पब्लिश किया था अल-शिफा वालों ने कि ड्यूरिंग द कोविड डेज के अंदर जो टेलीमेडिसिन है वो इतना ज़्यादा कोई फ्रूटफुल काम नहीं कर सकी पाकिस्तान के लिहाज से, तो आप इसको शायद में भी आपकी नज़र में गुजरा होना हो तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, तो आप इसको क्या देखते हैं? I think this is very pertinent questions, और इसमें चूंकि टेलीमेडिसिन की इंचार्ज इस वक्त बैठी हैं प्रोफेसर बिल्कीस शबीर, इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट को ट्रीट किया। इन दोनों क्वेश्चंस को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और फ्यूचर वे फॉरवर्ड शी विल रिस्पॉन्ड।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आप फ्यूचर की बात करते हैं, मैं पास्ट की आपको बताती हूँ कि इट एक्चुअली द स्टोरी ऑफ टेलीमेडिसिन स्टार्टेड बैक इन द ईयर 1980s when it started off with psychiatry in the Western world. And that was the time when they stressed on remote type of teleconsultation, how safe it was. It started off, it continued back in the beginning of 2019. The guidelines of American Diabetes Association, they recommended telemedicine. This is before COVID. This is January of 2019, when they recommended telemedicine as a part of follow-up of diabetic patients. And then on the 26th of December 2019, the pandemic was announced. And as our Vice Chancellor has stressed, how King Edward Medical University started off with tele-corona services, which I would give the credit to the Vice Chancellor that it was his vision to start off with all the other telemedicine desks. And you would be amazed to find out it actually started out of the crisis of COVID. But we later found out how useful it was. Believe you me, we received calls from more than 75 districts of Pakistan. And the districts from where we received the calls, that the first time I had actually come across those names, they were from so distant areas, underprivileged, absolutely outreached, people not having simple, basic facilities like antenatal, basic, बहुत basic बातें होती थी. And then we sort of, extended it to the extent, as our Vice Chancellor Sahab, he shared with you, tele-ICU. We were, as all of you know, all back in the 2021 May, you will remember all the ICUs of, at least I can say, of Lahore and most of Punjab were filled to the brink. And the thing was, people were actually dying of oxygen. If you remember, our neighboring country, we would be seeing such pathetic situation. And what we did was, at that time, that we extended these consultant services onto the smaller affiliated DHQ hospitals and rural health centers where we could establish some sort of ICU service. And I'm very, happy to say, when you talk about the future, it's very, very heartening to know that WHO, when it comes to COVID, labeled Pakistan the 5th best country in being able to manage COVID, number 1. King Edward Medical University Telemedicine Department won the Bury International University Ranking Award, and the THE ranking, the higher education ranking, where we mentioned and we talked about and we mentioned telemedicine as a part of disaster management and crisis management, we received recognition. So why not all across Pakistan? So your question was the future. Why cannot we extend it to others, say starting off with with other teaching hospitals? And one thing which we were planning at King Edward, and inshallah we are going to prosecute at Fatima Jinnah Medical University, inshallah ta'ala, is establishment of telehealth clinics. By that we mean, one is asynchronous, encounter with a patient, where you store the data and you later on evaluate it. The other is synchronous, when the patient is right in front of you. We can further, if we were doing up till here, we can further, strengthen it by establishing telehealth clinics where we have special gadgets like telestethoscope, tele-ultrasound probe, tele-echocardiographic probe, otoscope, tele-ophthalmoscope. So we can, any person with a minimal amount of training can be there. It can be a staff nurse, it can be a paramedic, and they can help seek, advice from a consultant far away. So this is the future of telemedicine.
थैंक यू मैम, अब आपने बहुत कम्प्रिहेंसिव आंसर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे है कि आप जी सर, बस लास्ट क्वेश्चन सर, यूज ऑफ एआई के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू पीएमडीसी सर, उनके राइट्स रेगुलेशंस आपको पता ही है कि जिस तरह हमारे पास होते हैं कि डॉक्टर रॉन्गली मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं, या उसके लिहाज से कुछ काम कर रही हैं सर? बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। देखिए, इसमें मैं बताऊं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हर इदारे के बने होते हैं, और मेडिसिन का प्रॉपर यूज, पेशेंट के राइट, पेशेंट की प्रिविलेजेस, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेट एसओपीज और रूल हैं, पीएमडीसी के लेवल पे है। बाकी जहां तक गलती का ताल्लुक है वो पाकिस्तान में भी है और अमेरिका में भी है और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। सो इसमें चेक और बैलेंस का एक सेट क्राइटेरिया है एट द लेवल ऑफ regulatory body and at the level of universities. डॉक्टर उमर खान साहब प्लीज गो अहेड। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सवाल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उमर खान हूँ, इस मेडिसिन में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। सर अस्सलाम वालेकुम सर आपको। सर की जहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सी खिदमात सर उसमें से कुछ खिदमात जो हैं, एक तो सर आपने ई लॉग स्टार्ट की, दूसरा सर आपने जो कोविड के दिनों में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे, और बहुत अच्छे एग्जाम्स कंडक्ट हुए। और सर आपकी इतनी नेकी है, उसमें से चंद एक नेकी जो सबसे बड़ी सर मुझे लगती है वो टेली मेडिसिन की शक्ल में है सर, जिसमें आपने और मैडम बिल्किस में डेली सुबह आप विजिट भी करते थे, पेशेंट्स के बारे में भी पूछते थे, और जब लोग आईसीयूज में घबरा गए थे और ओपीडीज में आने से बहुत डरते थे, ओपीडीज भी क्लोज थी, तो सर टेली मेडिसिन ने बहुत ज्यादा इसमें हेल्प आउट किया है। मैंने खुद टेली मेडिसिन में बहुत ज्यादा ड्यूटीज की हैं। आपने और मैडम ने कभी कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें आप लोगों ने टेली मेडिसिन को विजिट ना किया हो। तो सर ये बहुत बड़ी एक आपकी तरफ से नेकी है, अल्लाह आपको इसका अजर दे। Thank you very much. I think this is a team work and credit goes to you people जिन्होंने काम किया, और उन लोगों को क्रेडिट जाता है जो हम तो बैठे हुए हैं, जो साउथ पंजाब में एक हफ्ता लगा के आए, जो सेवन शरीफ में गए, जो लाड़काना में, जो शदादपुर में गए, ये उनको क्रेडिट जाता है। और उमर, आप 24/7 आईसीयू में काम करते रहे। दिस इज ए टीम वर्क एंड वी सैल्यूट यू पीपल जो कि फ्रंट लाइन वर्क कर रहे हैं। जी सर, दुमान साहब, बिल्कुल your सर, question. थैंक यू सर। Thank you. दुमान साहब, your question please. थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंटेशन का, बहुत अच्छा लगा, मुझे पहले भी थोड़ा सा आइडिया था और आज और डिटेल से सुना है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है और एक सजेशन भी है। क्वेश्चन तो ये सुनना चाह रहा हूँ सर कि किस किस्म के चैलेंजेस आजकल आपको फेस हो रहे हैं इस टेली मेडिसिन की इम्प्लीमेंटेशन में। जाहिर है हर लेवल पे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन आजकल किस किस्म के चैलेंजेस आए हुए हैं आपको और आप उनको काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? और सजेशन ये है कि अगर आपको इसकी मोबाइल ऐप भी अगर डेवलप करवा लें तो बहुत अच्छा होगा, सजेशन है, बाकी देख लें। नमान साहब, मैंने पहले कहा था कि ये जरा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नीयतें ठीक हो, रास्ता मिल जाता है। 24 आवर में हमने किंग एडवर्ड में जब इस्टेब्लिश किया तो हो गया, काम चल गया, टेली कोविड से स्टार्ट हुआ और फिर 15। लेकिन जो चैलेंजेस उस वक्त है, आज भी वही चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंजेस तो आपको टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी का है, रिसोर्सेज का है। सेकंड आपको ह्यूमन रिसोर्स का है कि आपके डॉक्टर्स और फिर उनकी ट्रेनिंग का साथ साथ, और थर्ड ये कि उनकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और उनको कन्विंस करना। ये शुरू में ये रेजिस्टेंस हुई, और लास्ट जो मैं चैलेंज फील कर रहा हूँ दैट इज ऑफ रेगुलेशन। क्योंकि टेली मेडिसिन पे जब आप किसी पेशेंट को कंसल्टेशन देते हैं तो उसमें वो दैट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द कंसल्टेशन जो आउटडोर में आके वो आपसे कंसल्टेशन लेता है। बट इसमें जो फायदा है कि आप प्रिवेंटिव मेजर टेली मेडिसिन के जरिए कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं, साइकेट्रिक इलनेस को देख सकते हैं, कुछ इलनेसेस लाइक डर्मेटोलॉजी के उनको देख सकते हैं। कुछ इसके फायदे, कुछ लिमिटेशंस हैं। और जो चैलेंजेस हैं, अगर मेरा ख्याल है टीम वर्क हो, लीडरशिप ठीक हो और इसमें एक जॉइंट एफर्ट हो तो यू कैन ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस। मोबाइल ऐप के बारे में मैं बता दूं, आप इसी वक्त बैठे हुए गूगल ऐप पे जाएं और टेलीमेडिसिन KEMU इसको ऑन कीजिएगा। ऐप इज ऑलरेडी देयर। इसमें 15 डिपार्टमेंट के नंबर हैं, डायल करके देखिएगा और कल टेस्ट करके मुझे बताइएगा कि ये ऐप कितनी कामयाब है। किंग एडवर्ड पे मैं इसको इस्टेब्लिश करके आया था, FJ में वी आर ऑन द वे।
चलिए बहुत शुक्रिया सर। एक जमीनी सवाल और ले लें अगर आपके ऊपर टाइम तो काफी मैं ले रहा हूँ। सर इस ये जो टेलीमेडिसिन के हमारे कॉन्सेप्ट है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है बाय एंड लार्ज हमारे कंट्री में? लोग इससे सेटिस्फाइड होते हैं? कोई फीडबैक लेते हैं आप लोग, या मतलब एक दफा बंदा चेक कराता दोबारा आता नहीं है या आता है? इसमें जब एक कॉल आती है उसको उसका स्टैटिस्टिक उसके नाम से लेकर उसकी जो ऑलरेडी उसके सिम्टम है, डिजीज है, ट्रीटमेंट है, फॉलो अप है, दैट ऑल इज देयर। और आखिर में ये क्वेश्चन होता है कि आपसे जो बात की गई है, ये पहले कंसल्टेशन दी है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? तो जो 18,000 पेशेंट का डाटा हमने कलेक्ट किया, इसमें 97.8% सेटिस्फेक्शन रेट था। 2% ने कहा कि हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। सो फीडबैक साथ साथ है, और जो आज सजेशंस आती हैं उसके मुताबिक हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहे। सर बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, थैंक यू। जी एनी अदर क्वेश्चन जी? मैं फिर आखिरी सवाल करूं, अगर हमारे कोई वाइस चांसलर साहब सवाल करना चाहें। सर मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो यही लिंक विद द नोमान, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट होता है ना, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट की नब्ज ना पकड़ी जाए, उसकी स्टेथोस्कोप लगा के चेक ना किया जाए, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो नहीं आती, ऑब्वियसली that entirely depends on awareness, education और sensitization level पे ना पूरे मुल्क के अंदर, and the universities can play a role all across the country। जहाँ जहाँ मौजूद है इस हवाले से मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज के कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, obviously they can be a very good useful tool for increasing the awareness among the masses in their areas। इसको प्रमोट किया जा सके ताकि ये हेल्थ की फैसिलिटीज और एक्सेसिबिलिटी सबको मिले। अच्छा सवाल मेरा सर ये आपसे, देखें देयर इज ऑलवेज ये मकसद इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल यूनिवर्सिटीज के दरमियान कोई ऐसा राब्ता हो जाए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाए, स्पेशली इन R&D के अंदर। And we have seen globally the trends where the European Commission, for example, during the time of COVID, they developed this global research collaboration for infectious disease preparedness। अब हम इस वक्त जो फ्लड की सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं, सैनिटेशन हाइजीन हमारा 5वां नंबर है इन टर्म्स वर्ल्ड वाइड, इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन हाइजीन, और उससे एसोसिएटेड बीमारियां बेशुमार, इससे हम अपना तदारुक कर सकते हैं थ्रू दिस टेलीमेडिसिन के फोरम के जरिए से, इंजन के जरिए से। And similarly, maternal and child health is a major agenda. Malnutrition, stunting is another agenda, where small awareness programs through telemedicine can help and change the future of landscape of this country, जहाँ पे 37% बच्चे जो हैं इस वक्त स्टंटिंग ग्रोथ के साथ, वेस्टिंग के साथ आ रहे हैं। तो जरा सी उनको जो तालीम और तरबियत एक अर्ली एज में दे दी जाए, तो एक मैसेज को जो हमारा इस वक्त जो इंटेलेक्चुअल डिजास्टर होने जा रहा है फ्यूचर में, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड हाउ बेसिकली वी कैन डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, जिस तरह ये कमीशन ने ग्लोबली किया बिटवीन द यूनिवर्सिटीज, आपस में कैसे इन चीजों को स्ट्रेंथन कर सकें और कंसोर्शिया बना सकें कि इन कॉजेज के लिए मिलजुल के फाइट कर सकें। योर टेक ऑन दैट सर। एक तो मैं नामान की बात से आगे स्टार्ट करूंगा, और आपने भी बात की कि लोग चाहते हैं कि पल्स देखी जाए और स्टेथोस्कोप लगाई जाए। इसमें जो टेली कंसल्टेशन का फायदा है उसका कुछ आपने भी तस्करा किया, और मेरे लेफ्ट साइड पे हमारी कंसल्टेंट है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की। आप प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की ले लें, एक तो ये कि आपको कार्डियक डिजीज है, आपको पल्स देखना, कार्डियक मॉनिटरिंग करना, पेशेंट का आईसीयू में, दैट इज वन थिंग। बट द सेकंड थिंग इज जो हमारे एक विजन में भी है कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के शोबे को हम यहाँ इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह दैट विल बी वन ऑफ द फाउंडर डिपार्टमेंट इन एनी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर अजरा का एक्सपीरियंस है आयरलैंड का और सऊदी अरेबिया का। अब प्रिवेंशन में टेली कंसल्टेशन के जरिए आप कह सकते हैं कि भाई स्टॉप स्मोकिंग, अपना वजन कम कर लें, आप डेली वॉक करें, आप इस तरीके से आपको मॉनिटर करें। इसके लिए पेशेंट को आके पल्स दिखाने की जरूरत नहीं है। सो टेलीमेडिसिन का रोल अवेयरनेस में, प्रिवेंशन में, काउंसलिंग में, एब्सोल्यूट टर्म में। फिर रहीम यार खान का एक बच्चा हमारे पास आता है और ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक में उसकी सर्जरी हो चुकी होती है, उसका कहा कि भाई 3 महीने के बाद या लाइक 3 वीक्स के बाद आप एक्सरे दिखाएं। वहीं से एक्सरे करा के अपलोड करके टेली कंसल्टेशन के जरिए एडवाइस ले लेता है, फॉलो अप,
उसको रजिंद्र खान से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वन थिंग कि इसका इस्टेब्लिश रोल। फिर तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिस पे हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, वहां सर्जन ऑपरेट कर रहा है, उसको किसी जगह पे गाइडेंस की जरूरत है और प्रोफेसर दे आर देयर टू गाइड। इसी तरह फिजिशियन दे आर देयर टू गाइड। और अगली बात अब ये कि कंसोर्शियम, तो इस वक्त तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आप इस वक्त बैठे हुए जैसे हम बात कर रहे हैं पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में, आप पूरी दुनिया में भी कई बात कर सकते हैं। सो वी हैव टू सपोर्ट ईच एंड अदर। और इसमें हमारा जो डेवलप वर्ल्ड है और पाकिस्तान है और मिडिल ईस्ट है, इन तमाम को एक जॉइंट एफर्ट करना होगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो टेलीमेडिसिन में भी हमने यूटिलाइज की, वो थी सर्विसेज ऑफ आर एलुमनाई, केमका यूके, केमकाना यूके और यूएसए में बैठे हुए, दे हेल्प आर डॉक्टर जो कि आईसीयू में काम कर रहे थे। इसी तरह फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में जो फातिमा जिन्ना के एलुमनाई है, उनके जरिए भी हम काम कर रहे हैं। एक मेरी छोटी सी सजेशन है हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, आप जरूर दीजिएगा जब मीटिंग पे चेयरमैन एचईसी मुख्तार साहब तशरीफ लाए, कि हमारे एचईसी में डिफरेंट जो है वो डेस्क है, लेकिन जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज का एक सेपरेट डेस्क मॉनिटर करना, उनके लिए एचईसी में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो यूनिवर्सिटी मेडिकल का एक कंसोर्शियम हो, तमाम यूनिवर्सिटी का हो, ऊपर एचईसी हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आखिरी में करना चाह रहा हूँ, रिसर्च पे मैं बात नहीं कर सका, हमारी डायरेक्टर रिसर्च भी मौजूद है, कि मैं जब कनाडा में गया आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, साथ ही उन्होंने बिग डाटा की बात की। तो बिग डाटा का लोगों को कंसेप्ट उस अंदाज में नहीं था। तो ये बिग डाटा जो जितना इसका नेट पे अवेलेबल डाटा है, वी हैव टू यूज दैट डाटा फॉर द रिसर्च। ये अपने स्टूडेंट्स को और पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल, आगाज उसका बहुत स्टार्ट से होकर और एंड तक हर किस्म की रिसर्च और रोबोटिक सर्जरी तक होता है। और जो टेलीमेडिसिन है, ये मैं समझता हूँ दैट इज द फ्यूचर। लोग रोबोटिक की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया रोबोटिक सर्जरी कर रही है, पाकिस्तान में भी हमने इसको स्टार्ट किया, लेकिन सेफ्टी को कंसिडर करते हुए टेलीमेडिसिन को विद परफेक्शन हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। Thank you very much. We would like to put it basically the data utilization globally has helped us in preventing the diseases through early warning systems. तो वो बड़ा जरूरी है कि वो डाटा बेसिस जो मौजूद भी हो, ऑथेंटिक हो, और फिर उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जाए इन हेल्थ सेक्टर. So obviously it is going to be something which is will help in improving the health status in the country as well. So with these words, if there is any other question, we'd like to thank you very much, Professor Gondal साहब और Professor Dr. Bilkis और उनकी हमारी जो ऑरिक की डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं. So and hope to see more a bigger consortia during the actual conference. That's what we are going to do basically, where the people from the general university and the American universities get together and start working together and pooling their resources. The outcome would be excellent. That's what we are believing, and hopefully to see you guys during that conference with more concrete ideas. And till that time, I hope to see you guys on 29th. And thank you very much, sir, again, and for joining us and for your. And we have recorded this for all those vice chancellors who have not been able to join us. Will be able to take help from this as well. So thank you very much, and God bless her. Thank you, Bukhari Saab. बहुत शुक्रिया, and see you on 29th, inshallah. जी सर, बिल्कुल. Thank you. Thank you very much. चलो, thank you जी. नुमान, खुदा हाफिज. कल की तैयारी फिर कीजिएगा. Thank you. जी, thank you sir. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.